Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. Today we are going to discuss the final session of speed, distance and time, that is boats and stream. Prior to this topic we had discussed speed, distance, time, then question problem based on trains. Now this time we are going to discuss about boats and stream. But before I start my session, just let me cross check if I am audible to all of you and if you are able to see my screen or not. So just hold for a while. So I can see that you are able to see me, you are able to hear my voice. One more thing that before I start this session, please like this video, share with this your friends and please subscribe to our channel so that you will be getting regular updates related to design and architecture entrance exam. So दिस इज द सेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, बट उससे भी पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक समझा देता हूँ यहाँ पर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का। तो यानी कि अब यहाँ पर व्हेन वी सॉल्व बोर्ड्स एंड स्ट्रीम क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या होता है कि आपको ये समझना चाहिए कि हाउ स्पीड इज यूज्ड इन अवर बोर्ड्स एंड स्पीड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम चैप्टर। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ केसेस डिस्कस करता हूँ when it comes to boats and stream. So let us say this is your stream and it is flowing in this direction और आपकी बोट कुछ इस स्ट्रीम पर ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में लेट अस से। तो यानी यहां पर लेट अस से अगर आपकी बोट की स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, या फिर बोट्स स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर और जो पानी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो आपको ये समझना जरूरी होगा आपके लिए कि अगर आप बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली बात है पानी उसको पुश कर रहा होगा, अगर पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। आई रिपीट माई आइडिया दैट अगर आपका जो स्ट्रीम है वो भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और बोट भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि जो पानी है उसका भी पुश आपकी बोट को लगेगा। तो जो नेट स्पीड यहाँ पर आप बोल रहे होंगे बोट की, जो नेट स्पीड आपकी या टोटल स्पीड आप जिस बोट की बोल रहे होंगे वो कहलाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम मीन्स अगर आपकी बोट और आपके पानी का डायरेक्शन सेम है तो यू कॉल इट डाउन स्ट्रीम, राइट। तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो स्पीड है दैट इज गोइंग टू बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये चीज समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दैट x plus y is the actual speed of boat, that is the effective speed of boat। ठीक है। For example, if stream is not traveling, if stream is not traveling यानी कि still water है, if it is still water, in that case boat is going to be speed of boat is said to be x किलोमीटर पर आवर। जैसा कि ये बिल्कुल उसी तरह से कि मान लीजिए रोड है और आपकी रोड पर आपकी गाड़ी चल रही है तो ऑब्वियसली रोड स्टिल रहती है, एक ही जगह पर रहती है। सो यू ओनली टॉक अबाउट स्पीड ऑफ व्हीकल। तो इसी तरह से ये वाला आइडिया है, ठीक है। बट स्ट्रीम के केस में हमारा पानी भी कई बार चल रहा होता है आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज वाई हम यहाँ पर उसकी भी स्पीड को कंसिडर करते हैं। अदरवाइज अगर आपका पानी स्टिल है तो इन दैट केस स्पीड ऑफ बोट इज गोइंग टू बी x kilometer per hour। Now suppose consider a scenario where your stream is still traveling in the same direction as it was traveling earlier, but now the new case is कि आपकी boat return आ रही है, या यूं कहिए कि this time your boat is traveling in the opposite direction। First, earlier you were traveling in the right direction, now you are traveling in the left direction। So in that case, speed of boat in this case is going to be x minus y kilometer per hour। So the keyword that we use here for speed of boat when your boat is traveling opposite to the direction of speed of stream, it is known as upstream। उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं।
I hope everyone is clear with this idea. So good afternoon, Utkarsh. So what I am doing, trying to explain here is that कि यहाँ पर आपका speed of stream क्या है, ठीक है? Now, one more thing आपको यहाँ पर समझनी चाहिए कि यहाँ पर जब हम स्पीड की बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा. But instead of writing merely speed or s, how do we denote speed? We denote generally by s. So instead of calling only s equal to speed equal to distance upon time, s equal to d upon t, here we will be using, in place of x, we will be using either x plus y, x minus y, or simply x. It could be x plus y equal to d upon t. X plus y is d upon t. So x plus y is the actual speed of your boat in downstream. Another case could be x minus y, that is speed of boat upstream is again distance upon time, or it could be simply x equal to d upon t. So it depends upon the question what data we are given with, and based on that we are going to be using any one of the cases as mentioned in the question. So I hope सभी को clear हो रहा होगा. All the online people who are watching us, please bring your friends with you as well. Share this link with as many people as possible. चलिए. So let us come to our main motto, that is question discussion, and then we will be understanding a bit more about it. So this is the very first question in front of you. A boat can travel with the speed of 13 kilometer per hour in still water. Now you need to understand here is that what data we are given with. So we are given with speed of boat in still water, and that is 13 kilometer per hour. That means we are given with the value of x. So x is 13 kilometer per hour, right? If the speed of stream is 4 kilometer per hour, that means y is equal to 4 kilometer per hour. Y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर है. We have to find out the time taken by the boat to go 68 kilometer downstream. So distance is also mentioned to it. It is 68 kilometer. We have to find out time. We have to find out time in order to go downstream. In order to go downstream means your boat and stream are traveling in the same direction. If your boat and stream are traveling in the same direction, how much time will it take to cover 68 kilometer? This is what the question is asking. I hope सभी को ये आइडिया क्लियर होगा. तो यानी यहाँ पर अब अगर मैं स्पीड ऑफ बोट निकालना चाहूँ तो स्पीड जो हो जाएगा वो हमें पता है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. But in place of speed, I will be speed will be replaced with x plus y. Speed को हम कैसे लिखते हैं? X plus y. Why I'm writing x plus y? Because the question is asking about downstream. So it is going to be 68 upon time, right? तो हमें यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर टाइम को किस तरह से निकालेंगे? टाइम इज गोइंग टू बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब स्पीड की अगर मैं बात करूं, so speed is going to be x is given as 13 and y has been given as 4. So 68 upon 17, which is 4 hours. यानी कि अगर आपकी बोट और स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यू विल बी टेकिंग 4 hours to complete this distance. I hope everyone is clear with the idea, right? And if you have any doubt related to this question, you can ask me in the chat box. So आगे बढ़ते हैं तब तक. Now, let us look at this question, what it reads. Time taken by boat to travel a distance upstream is twice the time taken by it to travel the same distance downstream. Now, what this question means, a person is traveling upstream once and the same person is traveling downstream once. Now, he is taking 2 times more time in while traveling upstream as compared to downstream. Let me explain you this idea once again. For example, if you are traveling through a boat on this water and water is flowing in this direction, and let us say you are taking time to be equal to t. Water is flowing in this direction and boat is also flowing in this direction. If you're taking t hours to complete a certain distance,
Then when you return, that means when you return means when you travel in this direction, in opposite direction, it takes you two times more, two times as compared to the previous one. So 2t times you will be taking. तो ये ना कि यहाँ पर जो डेटा हमें ये समझने की जरूरत है, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम एंड टाइम टेकन व्हेन वी वर ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम. तो अब मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग 1 hour हियर, you are going to take 2 hour in this case. This is what you are going to be considering. This is what you are given with, idea given with. So time का हमें रेशियो दिया है, ठीक है. What more we are given with? If the boat travels 50 kilometers in 4 hour 10 minutes in still water, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी दे रखा है, that is 50 kilometer, and if the boat travels 50 kilometer in 4 hour 10 minutes in still water, यानी यहाँ पर आपको टाइम जो दे रखा है वो स्टिल वाटर में दे रखा है कि मान लीजिए अगर पानी अपनी जगह पे है, द वाटर इज नॉट ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन, द वाटर इज एज इट इज at its place. So in that case, your boat will take 4 hour 10 minutes to cover 50 kilometers. That means time is simply I'm representing it by t. This is 4 hour 10 minutes. So 4 hour 10 minutes should also be converted in hour so that our entire time unit will be in hour. So 4 hour plus 10 minutes means 10 by 60 hour. It is simply 4 plus 1 by 6. So it is going to be 25 by 6 hour you are taking. Am I clear? ठीक है. Now, तो यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है in a still water. What we have to find out then, what is the speed of boat in downstream? यानी कि हमको जो निकालना है ना बच्चों, what the question is asking, the question is asking what is the value of x plus y. सभी को क्लियर है क्या? तो यहाँ पर x plus y की हमको वैल्यू निकालनी. नाउ हाउ टू गो अहेड विद दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन? So we have, first of all we will be using this data, that is time upstream and time downstream is 2/1. अब टाइम को हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों? टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड यहां पर हम अपस्ट्रीम के लिए स्पीड किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? x माइनस वाई. सिमिलरली डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस वाई. व्हेन डाउनस्ट्रीम यू यूज x प्लस वाई. In case of us upstream, you use x minus y. Now, no matter what is the value of d here, however, we are given 50 in our question, but still, you without using that 50 as well, you can simply use d and you can cancel it. Okay? Then, in the next step, you are going to cross multiply these entities. So, you are going to get x plus y is to x minus y. And this ratio was given to us as 2:1. I hope सबको ये चीज याद होगी. ठीक है, चलिए. So this what we are given with x plus y upon x minus y, ये हमको 2/1 given है. अब यहां से ये समझना जरूरी है कि हमें और क्या डेटा गिवन है. यहां से आप x और y के बीच में ऑब्वियसली रिलेशनशिप निकाल सकते हो. किस तरह से निकाल सकते हो? अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई एम गोइंग टू गेट x प्लस वाई, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई. सो आई एम गोइंग टू गेट x plus y, it is equal to 2x minus 2y. So all the x वाले expression एक तरफ and all the y वाले expression on another side. So I'm going to get x minus 2x, it is equal to minus 2y minus y. So x minus 2x is minus x, it is equal to minus 3y. Minus are cancelled out. So x upon y, x equal to 3y और x upon y equal to 3/1. You can use any of the data out of the two. So ये एक रिलेशनशिप और आ गया. बस अब एक चीज यूज करना और बची है माय डियर पीपल, that this data, when distance is 50 kilometer, you take 4 hour 10 minutes to cover a distance. In still water, this condition should be remembered. You take 4 hour 10 minutes in still water. ठीक है, तो यानी यहां पर आप जो है टाइम आपको दिया है, डिस्टेंस आपको दी है, आप स्पीड निकाल सकते हो. अब सवाल आता है कि स्पीड, विच स्पीड वी आर गोइंग टू गेट.
speed in still water, speed in upstream, speed in downstream. So as the time is given for still water, that is why the speed that you're going to get is to be of still water. So speed is equal to distance upon time. To be more appropriate, x is going to be distance upon time. Distance is 50 kilometer. Time was 25 by 6. So 6 will go to the numerator. It is going to be 50 into 6 upon 25. 25, 50 is cancelled two times. So 6 into 2 is 12 kilometer per hour is the speed of boat in still water. I hope I am clear with this idea until here, up to here. So x की वैल्यू हमको given है. Now what we need to find out, हमें यहाँ पर x plus y निकालना है. That means we also need to find out the value of y. तो हमने यहाँ पर x equal to 3y बोल रखा है. तो that means if I use this data x which is 12, it is equal to 3 times of y. The y is going to be 4 किलोमीटर पर आवर. अब हमें देखिए फाइनली अब हमारा डेटा हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली वे टू फाइंड आउट व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम. दैट मीन्स एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई थी हमसे. सो एक्स प्लस वाई इज गोइंग टू बी माई डियर पीपल, इट इज एक्स प्लस वाई इज 12 प्लस 4 which is 16 kilometer per hour. So this is the speed of boat downstream. I hope to all the online people who have joined us are able to understand this question as well. आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. And in case if I'm not able to understand, do write me in the chat box, do write me in the comment section if you're watching this video after the live has been recorded. चलिए. So let us move to the next question. Now, this is the next question. The speed of the boat moves upstream. As soon as you read this word upstream, downstream, you should be careful. You should be using the idea x plus y, x minus y, right? So a boat moves upstream at the speed of 12 kilometer per hour. That means you are given the value of x minus y to be equal to 12 kilometer per hour. X minus y is given as 12 to us and covers a distance of 144 kilometer. Distance has been given as 144 kilometer. If the rate of flow of the stream is 4 kilometer per hour, so you have been given the value of y as well. It is 4 kilometer per hour. So the time taken by the boat to move downstream is. So we have to find out time taken by the boat to cover the distance downstream. This is what we need to find out. So Shivan, Shivsai, you are asking something, sir. When is the registration date of UC 2023? Shivsai, we will be letting you know when the registration are going to be start. Generally, it starts in October or in the month of November. So as soon as anything related to registration dates comes out, we will be definitely letting you know about it. So don't worry. And for that, you can subscribe to our channel so that आपको notification आता रहेगा ना तो आपके सामने भी आ जाएगा if any day UCEED releases its registration dates. So we will be definitely give spreading information related to this. तो आपको भी पता चल जाए. So don't worry about that. Right? Now, let us get back to our question once again. तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको ये सारे डेटा दिए गए हैं. Now, if I wish to find out time, I need to find out the speed of boat, actual speed of boat. As of now, I know the value of y, I know the value of x minus y. First of all, I need to find out the value of x plus y. तो x plus y कैसे निकालेंगे? पहले x तो निकाल लें. तो I was given x minus y equal to 12 and y was equal to 4. So x minus 4 is 12. That means x must be equal to 16 kilometer per hour. This is the value of x. Now what I need to find out, I have to find out time downstream. That means time जो होता है ना बच्चों downstream का वो होता है distance upon speed. सॉरी हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जब आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड कौन सी स्पीड की बात करते हैं? स्पीड डाउन स्ट्रीम. सो इट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस वाई. जब टाइम आपका डाउन स्ट्रीम है सो स्पीड मस्ट ऑल्सो बी डाउन स्ट्रीम. सो डिस्टेंस हैज बीन गिवन एज 144 upon x plus y which is 16 plus 4. It is going to be 144 upon 20, that is 7.2 hours your boat is going to take. 7.2 hours is your boat is going to take in order to cover the distance of 144 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. आई होप ये आइडिया सभी को क्लियर होगा.
ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी था ये तो। चलिए, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्सो लेट मी चेक इफ यू आर एबल टू रीड द फॉन्ट available to you or not. Just give me a moment. Okay, so I can see that you are able to read the font that I have set. Also, let me know if you are facing any difficulty in reading or any in question. So just let me know. Now, let us move back to our next question. Speed of boat is in standing water, that means in still water, is 9 kilometer per hour. That means you have been given the value of x, which is equal to 9 kilometer per hour. And the speed of stream is 1.5 kilometer per hour. So y has been given as 1.5 kilometer per hour. A man rows to a place at a distance of 105 kilometer and come back to the starting point. So that means this is the your stream, and there is this man who is traveling on this boat. He reaches to some point and then comes back. Okay? The total time taken by him is, so we have to find out the time taken by the boat upstream plus time taken by the boat downstream. So total time we need to find out. Now, students generally are confused whether I should be taking the speed of the direction of stream in this direction or in this direction. So the good news is that you can take any direction as per your wish. Doesn't it affect our answer? No, it is not going to be. How? We will be seeing that as well. So let us say I am saying that my stream is traveling in this direction, and if boat travel in this direction, this case is set to be downstream because the direction of both boat and stream is are the same. तो यानी यहाँ पर आपका जो x प्लस y की जो वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू इज गोइंग टू बी 1.5. So 9 plus 1.5, it is going to be 10.5 kilometer per hour. This is the actual speed of boat when the boat is traveling in the same direction as that of stream. So the speed of boat is 10.5 kilometer per hour in this scenario. Now when your boat will return, that means obviously the direction of stream is not going to change. Obviously, how can you change the direction of stream? So the direction of stream is still moving in the same direction, but this time your boat is moving in the opposite direction. That means when you're returning to the place where you had started from, तो वहां पर आपका जो स्पीड रहने वाला है, नेट स्पीड यू आर गोइंग टू कैलकुलेट अपस्ट्रीम में आपकी जो स्पीड होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, दैट इज 9 माइनस 1.5. So it is going to be 7.5 kilometer per hour. It is the speed of your boat upstream. हमें यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है. टोटल टाइम मीन्स टाइम टेकन व्हेन ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन व्हेन ट्रैवलिंग डाउनस्ट्रीम. तो टाइम यहाँ पर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, you are traveling 105 kilometer. So distance is going to be 105 upon upstream में आपका जो स्पीड है that is 7.5. 105 upon 7.5 plus distance is still from B to A. You traveled A to B first, then from B to A, it is going to be 105. The distance is not going to be changed upon 10.5. तो यहाँ पर आप कैंसलेशन कर सकते हैं, या तो डेसिमल हटा के जीरो लगा देंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट 10 हियर. और इस केस में देखते हैं डेसिमल हटा के जीरो लगाते हैं, तो लेट अस कैंसिल इट बाय 5 15 टाइम. इफ आई कैंसिल इट बाय 5 210, 5 से फिर कैंसिल करते हैं 3 टाइम, 5 से कैंसिल करते हैं 42 टाइम, 3 से यहाँ पर 42 कैंसिल 14 टाइम. सो आई एम गोइंग टू गेट 14 plus 10, that is 24 hours you are going to take in order to move 100 kilometer 105 kilometer both upstream and downstream. I hope my idea is clear to everyone. Okay, so Sandeep, as I told you one previously as well in the same video, that
Whenever the registration dates are going to be started, we are going to have a separate session for that. As of now, no such news has come outside. Generally, it takes place in October or November. तो जैसे ही आपको any data, any information related to registration of UCEED, we are letting you know. So don't worry about that, right? So definitely we will be doing a session on that as well. How when the registration forms are filled up and how you are going to fill that. चलिए, now let us move to this question. What it reads: a boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C. तो यानी यहाँ पर आपका लेटर से this is your stream and this is point A to point B. So what it reads: a boat takes 19 hours. So total time has been given to you for traveling downstream from point A to point B and coming back to point C midway between A and B. तो यानी कि यहाँ पर point C होगा which is in mid of A and B. If the velocity of stream is 4 kilometer per hour, तो आपको y has been given as 4 kilometer per hour and the speed of boat in Stillwater is 14 kilometer per hour. So x has been given as 14 kilometer per hour. What is the distance between A and B? So this is what we need to find out. अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी होगा. A boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to B. यानी कि A से लेकर B तक आपने जो distance travel किया है वो downstream है. What does it mean? Let us say the river is flowing from A to B. In this direction, your stream, your water is flowing. It has been mentioned in the question. A boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to B. Right? So I hope Sandeep, idea is clear to you. Okay? Now, and coming back to point C, that means when you reach point B and when point B, now you wish to come at point C. So obviously, since you will be traveling in the opposite direction of stream, this distance from B to C is going to be called upstream, right? तो यहाँ पर हमको टोटल ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस हमको निकाल के बताना है. सो ऑब्वियस सी बात है, अब हम इस डेटा को किस तरह से यूज करेंगे. वी हैव बीन गिवन टोटल टाइम मींस यू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट, टोटल टाइम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी, दैट इज गिवन एज 19 hours to you. I hope this information is clear to you. 19 hours you are given with. So time is again distance upon speed. Distance अब कितना है? Now let us say A से लेकर C तक distance D है, C से लेकर B तक distance भी D है. ठीक है? Since we have been told that C is in the mid of A and B, so let us say the distance from first half is D, second half is D, so the total distance is 2 times of D. Right? From A to B, you are traveling 2 times of D kilometers. ठीक है? So time is going to be distance upon speed, that means 2D अपॉन स्पीड. स्पीड यहां पर आप देखेंगे, स्पीड आप ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो वो अप स्ट्रीम है. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो डाउन स्ट्रीम है. दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो x प्लस वाई यानी कि 14 प्लस 4, x एंड y हैज बीन गिवन टू अस 14 प्लस 4 प्लस time again distance. So distance this time is from B to C, which is D kilometers. So distance upon again this time speed is upstream, क्योंकि अब आप रिवर की अगेंस्ट फ्लो कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, टू बी मोर अप्रोप्रिएट. सो x minus y, that is 14 minus 4, that has been given as 19. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों. सो 2 times of d upon 18 plus d upon 10 has been given as 19. 2 and 18 cancel 9 times. So let us take the LCM. 9 and 10 का LCM is going to be 90. ठीक है? So I can see that cross multiply आप कर सकते हो. 10 into d is 10 times of d. 9 into this d is going to be 9 times of d. It is given as 19. ठीक है? Now चलिए.
So it is going to be 19 times of d upon 19 upon 90 is going to be 19. 19 and 19 are cancelled out. D is going to be 90 kilometers. D is going to be 90 kilometer means that means let us say from distance A to C or from C to B is 90 kilometer each. So the total distance from A to B is going to be D plus D, that is 2 times of D, that is 2 times of D की जो value होगी, that is 2 into 90, that is 180 kilometers. So this is what the question was asking, what is the distance from 2 points A and B. Now, this question, have a look at it. So the ratio between speed of boat and still water to speed of stream is 5:2. तो हमें यहाँ पर x upon y की वैल्यू 5/2 दे रखी है. You can also write 5k upon 2k. It is up to you. If 224 kilometers traveled by downstream in 4 hours, तो आपको जो टाइम दे रखा है डाउनस्ट्रीम का टाइम दे रखा है इट इज 4 hours. ऑल्सो आपको जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज गिवन एज 2 to 4 किलोमीटर. आई होप सभी को ये आइडिया क्लियर होगा, ऑल द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पीपल. ठीक है. सो टाइम डाउन स्ट्रीम में आपके पास 4 hour है और जो डिस्टेंस है वो 224 किलोमीटर है. देन find the difference between, let me correct, find the difference between speed of boat in still water and the speed of stream. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि x एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y. तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि x माइनस y की वैल्यू बतानी है बच्चों हमको अल्टीमेटली, राइट. So we need to find out the value of x and y both and then we will subtracting them. This is what we need to find out. तो चलिए यहाँ पर अब हम देखेंगे. तो यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, सो टाइम इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस हैज बीन गिवन एज 224 अपॉन स्पीड. नाउ स्पीड की अगर बात करें तो कौन सी स्पीड है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो यहाँ पर टाइम आपको किस लिए दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है बच्चों. सो टाइम सिंस टाइम इज गिवन एज डाउन स्ट्रीम तो स्पीड भी आपकी डाउन स्ट्रीम होगी. सो विच इज एक्स प्लस वाई. ठीक है. एंड दिस हैज बीन गिवन एज 4. सो इसको कैलकुलेट करते हैं. 4 is equal to 224 upon x and y has been given as 5k and 2k respectively. So it is going to be 7k. ठीक है. Now let us begin to cancel 7 and 224. So 7 3s are 7 2s are, right? K will go to the left hand side. So 4 times of k, it is 32. So k is going to be 32 upon 4, which is 8. तो k की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है बच्चों फाइनली. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट x एंड y. सो x वाज 5k एंड y वाज 2k. सो x जो है 5 टाइम्स ऑफ k which is 8, it is equal to 40 kilometers per hour and y is going to be 2 times of k which is 8, it is 16 kilometer per hour. अब फाइनली हमको क्या निकालना है बच्चों, we have to find out the difference between speed of boat in still water and speed of stream. यानी कि हमको x और y के बीच का डिफरेंस निकालना है. So x और y के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों, it is going to be 40 minus 16 is going to be 24 kilometer per hour. So I hope ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे बच्चों. So this was all about speed, टाइम एंड डिस्टेंस, और उसमें भी आज का जो सेशन था बोट्स एंड स्ट्रीम, दिस वाज ऑल अबाउट इट. ठीक है. You must be thinking this session was quite small as compared to the previous one. तो बच्चों हाँ, because we have already released these topics in parts. आप देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी जो व्हीकल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, they were released in 2 parts. Then there was 1 part of train and this is the final part of boats and stream. So overall अगर आप देखें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में we have covered a lot of question. You can practice them from there
एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू शुड बी सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल. आपकी यूसीट से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज आई है मुझे चैट बॉक्स में भी. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट वेन एवर द नोटिफिकेशन कम्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन वी विल बी लेटिंग यू नो. और हम बता रहे हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज वेल. सो ऑल द डिटेल्स विल बी गिवन टू यू बाय अवर चैनल. So please subscribe to this channel. You can also join our Telegram group whose description is given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स along with Instagram handle as well. So उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं. And one more thing, for accessing the PDF of this video, you can go to the description box once again so that आपको इसका जो PDF है with solution you will be getting that. And for accessing the previous videos PDF as well, आपको description box में सब कुछ मिल जाएगा. So this was all about today's session, people. I hope you must have learned a lot of new things in this session. You must have enjoyed this session. Thank you, everyone. Take care.